Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is an English for grade 4. We are learning unit number 10, Amazing Inventions. Yes, my dear teachers, I have segregated this whole lecture into these lectures, and complete lesson according to this lesson plan I have divided. In lecture number 1, under the title of grammar, we will learn about pronoun, noun, agreement. And this is question number 6 and question number 7. And in this lecture number 2, I have divided it in adverbs and its different kind, and we will cover a page number 79. And lecture 3, pronunciation skills, we will learn about trigraph and its sounds. And this is a trigraph, question number 5 on page number 78. So yes, my dear teachers, in lecture 4, comprehension skills, we will learn to locate information, to answer short questions, and we will cover up page 75 and 76. Lecture number 5, comprehension skill, we will generate questions through text, and we will cover page 76. Half unit we will complete and half unit we will get that here. In lecture 6, my dear students, listening and speaking, we will learn about regrets, how we can seek forgiveness. And question number 9 we will cover on page number 81. And next, last lecture is lecture 7, writing. We will learn about series of events in a paragraph, and we will do question number 10 on page number 81. So yes, my dear teachers and my dear students, in this way I have divided my whole lessons and complete chapter. So today we are going to start. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran verse number 89 and surah number 16, and we have sent down to you the book explaining all things. It is a guide, a mercy, and glad tidings to Muslims. Yes, my dear teachers and my dear students. So what this beautiful verse is telling us? This beautiful verse is telling us about the importance of Al-Quran. Which book is there? Definitely Allah sent to us Al-Quran, and it is a complete guidance for us. And it explains everything, every issue that we are facing in this world. It is explaining nicely, and we can get guideline from it. And it is a glad tiding to Muslims, means it is a source of happiness if we follow Al-Quran. So yes, my dear students, so now we are going to start our chapter, unit number 10, Amazing Inventions. So theme of this chapter is technology, and sub-theme is amazing inventions, discoveries. Yes, my dear students, technology क्या होती है? जो आजकल के दौर में आप देख रहे हो मॉडर्न एरिया है, और इस सारे एरा में, पूरे दौर में टेक्नोलॉजी ने किस कदर हमारी जिंदगी को चेंज करके रख दिया है. और अमेजिंग इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, आज हम सबके लिए जो फैसिलिटीज है, जो हमारी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज थी, इन अमेजिंग इन्वेंशंस की वजह से कैसे वो चेंज हुई हैं, और उन्होंने कैसे हमारे टाइम को कम किया है, टाइम कंज्यूमिंग को. तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स सी हाउ वी कैन गेट अबाउट दैट. सो ओपन बुक पेज नंबर 75. सो वी आर स्टार्टिंग. सीन मंजर है. क्या मंजर है यहाँ आप देखते हैं. इट वॉज द विंटर सीजन. द फैमिली मेंबर्स वर सिटिंग टुगेदर. एवरीवन वाज हैविंग अ सिप ऑफ टी. देयर वर 2 children, Hassan and Fatima. Their grandfather and grandmother were talking to each other. Their mother Salma was cooking something in the kitchen. Their father Naveed was looking for a box of winter clothes. Yes, my dear students, तो क्या मंजर हमें बताया जा रहा है कि कौन सा मौसम है? ये सर्दियों का मौसम था, और फैमिली मेंबर्स, सारे खानदान के जो अफराद हैं, वो एक रूम में बैठे थे और चाय पी रहे थे. वहां 2 बच्चे, कौन से 2 बच्चे हैं, क्या नाम बताया जा रहा है? हसन और फातिमा भी हैं, और उनके दादा दादी आपस में बात कर रहे हैं, और उनकी अम्मी
मम्मा जो है सलमा वो क्या कर रही हैं, वो कुकिंग कर रही हैं किचन में, और उनके बाबा नवीद वो क्या कर रहे हैं, सर्दियों के कपड़ों के लिए बॉक्स ढूंढ रहे हैं। ये सारा मंजर हमें बताया जा रहा है कि वहां क्या हो रहा है। सो लेट्स सी आगे क्या हो रहा है। When he came out of the store room, सो स्टोर रूम में वो कपड़े ढूंढ रहे हैं उनके वालिद, उनके अब्बू, तो वो जब वापस आते हैं स्टोर रूम से, ही वॉज होल्डिंग द बॉक्स ऑफ क्लॉथ्स इन वन हैंड एंड टू डिवाइसेस इन अदर। एक हाथ में उनके कपड़ों का थैला था और दूसरे हाथ में क्या थी, दो डिवाइसेस, दो आलात थे। देखते हैं वो क्या थे। एवरीवन वाज लुकिंग एट द डिवाइसेस इंटरेस्टेडली, सारे उन डिवाइसेस को, उन आलात को कैसे देख रहे थे, दिलचस्पी से देख रहे थे कि ये क्या चीज है। नेक्स्ट पेज 76 में आए। ग्रैंडफादर, ओह माय टेलीग्राफ, शो इट टू मी नवीद। तो एक हाथ में उनके क्या था, टेलीग्राफ था। तो नवीद से कहा ग्रैंडफादर ने कि मुझे दिखाएं। ग्रैंडमदर, योर टेलीग्राफ इज स्टिल परफेक्ट, लुक हियर इज माय टेलीफोन। तो क्या लाया था वो, एक हाथ में टेलीग्राफ भी था और टेलीफोन भी। टेलीग्राफ बाबा का था, उसके ग्रैंडफादर का, दादा अबू का, और ग्रैंडमदर का क्या था, टेलीफोन। ग्रैंडफादर, आई हैड बीन यूजिंग इट फॉर मैनी years in my office. Grandmother, I used the telephone for communication purpose in the past. It was really a good time. Yes बेटा, यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ माजी में जो हम आलात यूज करते थे आपस में बातचीत करने के लिए, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। बहुत पहले हम क्या यूज करते थे, टेलीफोन यूज होता था। तो दादी भी यही बता रही है कि मैं बहुत पहले जब भी कम्युनिकेशन पर्पस या बातचीत के लिए कुछ भी डिस्कस करना होता तो टेलीफोन के जरिए करती थी। नवीद, दीज वर इन द स्टोर रूम। नवीद ने क्या बताया, ये क्या थे, कहाँ थे, ये स्टोर रूम में थे। हसन क्यूरियसली, मुतजस्सिस होके, व्हाट आर दीज थिंग्स ग्रैंडफादर, ये चीजें क्या हैं दादा अबू। ग्रैंडफादर, दीज आर टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन माई चाइल्ड, कि मेरे बच्चे ये टेलीग्राफ और टेलीफोन है। हसन, फॉर व्हाट पर्पस आर दे यूज्ड, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा ये सारी डिस्कशन आपको बता रही थी, जब भी हम कोई न्यू चीज देखें जो हमसे पहले बनाई गई हो या जिसका हमें पता ना हो, तो डेफिनेटली हम भी उसके लिए मुतजस्सिस होते हैं कि ये कौन सी चीज है और ये कहाँ से आई है, इसकी हिस्ट्री क्या है। सेम लाइक बच्चे भी बहुत ज्यादा मुतजस्सिस थे, तजस्सुस में थे कि ये क्या चीजें हैं। ग्रैंडफादर, दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। दादा अबू ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, बातचीत के लिए। व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो फातिमा ने क्या पूछा, फातिमा ने पूछा कि ये बातचीत क्या होती है। ग्रैंडफादर, कम्युनिकेशन occurs when we send and receive a message. These are the old devices which were used for electronic communication. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है बेटा, अब कम्युनिकेशन को बताया जा रहा है कि बातचीत वो होती है जब हम किसी को मैसेज सेंड करें या रिसीव करें, और इस दौरान हम जो बातचीत करते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जो कौन सी डिवाइसेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाती है। मींस आलात के जरिए जो हम करें, और हम तो बातचीत भी करते हैं। सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप क्लासरूम में हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो वो भी कम्युनिकेशन होती है। बट दिस इज लाइव कम्युनिकेशन, जो हम डायरेक्टली कर रहे होते हैं। और ये किस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है जो हम डिवाइसेस के जरिए करते हैं। Hassan, grandfather, tell us about the journey of electronic devices from your young age to this day. तो हसन ने क्या पूछा कि उस दौर से लेकर अब तक जो भी कम्युनिकेशन ने तरक्की की है, जो आगे आई हैं पुरानी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो भी सफर रहा, तो वो हमें बताइए। Grandfather, their journey began in 1836 when Samuel Morse invented the telegraph. Long time back in 1976. I bought it from my office. I was young at that time. And he smiled. Yes, तो उन्होंने क्या बताया कि ये कब हुआ, इसकी जर्नी 1836 में शुरू हुआ टेलीग्राफ का सफर, और 1976 में इसे लॉन्ग टाइम अगो 1976 में उसके दादा अबू ने इसे खरीदा था, जब वो एक ऑफिस में काम करते थे और उस वक्त वो यंग थे, जवान थे। तो वो अपनी हिस्ट्री याद करते हुए बेटा क्या कर रहे थे, स्माइल्ड, मुस्कुरा रहे थे अपना पुराना वक्त याद करके। फातिमा, व्हाट अबाउट द टेलीफोन ग्रैंडफादर, तो टेलीफोन का भी बताएं दादा अबू। फातिमा ने पूछा, ग्रैंडफादर, इट वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876. Through this invention, voice could be heard over long distances. तो टेलीफोन का सफर कब शुरू हुआ, 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये इजाद किया था।
और इससे क्या था, दूर से भी एक दूसरे की आवाज हम सुन सकते थे, बातचीत कर सकते थे। फातिमा एंड हसन, इंडीड इट वाज अ ग्रेट इन्वेंशन, कि ये क्या है, दर हकीकत एक बहुत बड़ी इजाद है। नवीद, नाउ मोबाइल फोन्स हैव टेकन द प्लेसेस ऑफ द टेलीफोन। फातिमा एंड हसन, व्हाट इज डिफरेंट in mobile phone? Father Naveed, mobile phones are also devices for communication purpose. They can be carried wherever we want. They can help us to send and receive text messages. तो अब किसने जगह ले ली है बेटा, अब जदीद दौर मजीद आगे जा रहा है, तो किसी ने टेलीफोन की जगह मोबाइल फोन्स ले ली है। टेलीफोन हम साथ लेके नहीं घूम सकते थे, लेकिन टेलीफोन मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो हम अपने साथ कहीं भी जाएं, कहीं भी हैं, हम वो अपने साथ रख सकते हैं, अपने घर वालों से, अपने प्यारों से बातचीत कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम कॉल भी कर सकते हैं, आवाज़ भी सुन सकते हैं और मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये है मोबाइल फ़ोन का सारा वो। एंड फातिमा एंड हसन, मोबाइल फ़ोन्स आर आल्सो अमेजिंग। फातिमा और हसन ने क्या कहा कि मोबाइल फ़ोन भी बहुत ही हैरान कुन है। Naveed, mobile phones have changed our lives. Now it was time for dinner. Sarma called them to the dining room where they had dinner. The discussion on the invention came to an end. तो क्या हुआ, मोबाइल फोन भी क्या है, एक हैरान कुन इजाद है। और उनके बाबा नवीद क्या कह रहे हैं कि मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगियों को तब्दील करके रख दी है। तो डिनर का वक्त हो गया, रात के खाने का वक्त हो गया, और उनकी मामा सलमा ने उनको बुलाया और उनकी इस तरह ये सारी डिस्कशन जायदाद पे ख़त्म हुई। सो टुमारो विद आवर लेक्चर नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।